So the story starts at least a month ago. मेरा पुराना वाला कंप्यूटर नहीं चल रहा था and at least हर month वो एक बार खराब होता रहता था. So option left was getting a new one. The second thing I did was some internet research, and by internet research I meant a YouTube search. वीडियो भी नहीं खोली, description पढ़ा था बस. So all I came up with a 8 GB RAM, a good motherboard, a 10th generation CPU and a 1 GB graphic card. A 1 GB graphic card. Because previously I was using computer with like no graphic card at all. It was having just 4 GB RAM and 120 GB of SSD and it was working pretty good. So I thought कि 8 GB graphic card से at least थोड़ी सी performance बढ़ जाएगी and it would be better than nothing. The first thing I did was installing all the applications. So I got to adobe.com and I purchased the software. Illegal बिल्कुल नहीं था. I don't do illegal shit. मैं नहीं करता ये सब भाई, तुम लोग करते होगे, मैं नहीं करता. Damn bro, you got the whole squad laughing. And जैसे ही मैंने प्रीमियर को इंस्टॉल किया, I tried to open it for once. So I thought ये कोई ड्राइवर का एरर होगा. So I got to the shop and said आपने शायद outdated drivers इंस्टॉल कर दिए हैं इसमें and get me a new one, क्योंकि मेरे से खुद से नहीं हो रहा था. I tried. तो उन्होंने ड्राइवर अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, उसमें स्टूडियो ड्राइवर डालने की कोशिश की बट इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल. एंड हमने ग्राफिक कार्ड हटा के चलाने की कोशिश करी बट द प्रीमियर प्रो 2021 started crashing. So the last option left was actually opening the YouTube video at a description. I opened the YouTube video and they suggested that Premiere Pro के लिए at least तुम्हें 4 GB RAM चाहिए. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं. I got it. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है.